Hello, my dear student. How is everyone doing? Hello, students. How is everyone doing? Yes, how is everyone? Please acknowledge me in the chat box if I am audible enough and you are able to see me. Please write yes in the chat box if you are able to see me. अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो आप फटाफट से chat box में yes लिख दीजिए. Great, good to see you all. Please write yes in the chat box so that I get to know that you all have joined. And please do call your friends immediately because आज तो क्या है? आज तो bio का revision है. So we have questions from cells, from tissues and from why do we fall ill. ठीक है? चलिए फटाफट से आ जाइए and do call your friends. Hello, yes, I hope that everyone is doing great. All of you are great at your places. Hello everyone. Yes. So I think everyone is doing great, right? Good to see you all. Okay, fine. I am doing great. Good to see you all here. A very warm welcome to the official YouTube platform of Goprep Class 9th. I am Abha Pandey, your biology faculty right here at Goprep. I hope that all my students are doing great. Yes, guys. So call your friends immediately so that they do not miss such important session. आज के session में क्या होने वाला है? Questions. So I have bought a lot of questions for all of you. ठीक है? I am Abha Pandey, your biology faculty right here at Goprep. Yes, guys. So yes, let us begin our session. Okay. So you all know that revision is very important. It is very important for all of you, right? कि रिवाइज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम एग्जाम से पहले रिवाइज करते हैं, वो एग्जाम कोई भी हो, वेदर इट विल बी अ स्कूल एग्जाम, इट विल बी एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कुछ भी हो, we do revise. So that's why Goprep has launched a very special course for all of you in which you can revise your entire CBSE syllabus. Yes. So जिसमें आप अपना entire CBSE syllabus revise कर सकते हैं. Revise CBSE syllabus है, ठीक है? So yes, these are the two courses for all of you. So if you want, you can join this course. The course will help you to score better in your exam as well as to clear your concept. Yes. So now let us come to the code for the MENTI. Yes. So all of you come to the MENTI and the code is on the screen. The code is 7271389. हाँ जी, तो सब लोग फटाफट से MENTI पे आ जाइए. What you need to do बच्चा लोग, आपको क्या करना है? It's very simple, ठीक है? It's very simple guys. आपको www.menti.com पे जाना है और आपको ये कोड एंटर करना है बच्चे. कोड क्या है? कोड इज 7271389. I am repeating it again. The code is 7271389. So everybody come for the MENTI. Yes. And do call your friends जिससे competition और तगड़ा हो, मजा आ जाए बस. ठीक है? Yes. Do call your friends जिससे competition मजेदार हो जाए. Yes. So yes, if you are enjoying the session, अगर आपको session में मजा आ रहा है और आगे भी आएगा, ठीक है? So just hit the like button, subscribe to the channel and press the bell icon so that you remain notified for such amazing mentees. Yes, everybody come for the MENTI. The code is www.menti.com. You need to go to www.menti.com and the code is 7271389. All my dear students. Yes. And do call your friends immediately जिससे कि competition करने में मजा आए. ठीक है? आज हमारे पास क्वेश्चंस सेल से होंगे, टिश्यूज से होंगे एंड व्हाई डू वी फॉल इल से होंगे. ठीक है? वी हैव मिक्स्ड क्वेश्चंस, राइट? चलिए, ओके, कॉल योर फ्रेंड्स गाइस. कंपटीशन मजेदार होना चाहिए, राइट? मजा आना चाहिए कंपटीशन में. सो नाउ, ठीक है, नाउ लेट अस सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. विदाउट एनी डिले, let us move to our very first question of the day and the question is on the screen. So let us see what the question is trying to say. The question is saying nuclear envelope is in continuation with.
ठीक है, बता दीजिए फटाफट से कि न्यूक्लियर एनवलप इसमें से किसके कॉन्टिन्यूएशन में रहता है. इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद माइक्रोट्यूब्यूल्स, विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So let us see who will mark it correctly. Great, good to see you all. बहुत सही, बहुत मजा आने वाला है, मतलब बस. So yes guys, we have 27 kids who have marked it correctly. Now everybody come to the YouTube so that we can see the correct answer. We can understand the correct answer. Okay. Now, so the question is saying nuclear envelope is in continuation with. So if we talk about, let us see that this is the outer membrane of the nucleus and this is the inner membrane of the nucleus. So if we talk about the outer membrane, dear, of the nucleus is in continuation with endoplasmic reticulum, and especially which endoplasmic reticulum? It is in continuation with rough endoplasmic reticulum, because rough endoplasmic reticulum contains ribosome. Rough endoplasmic reticulum पे बच्चा ribosome होता है, and this ribosome is very much important for the formation of protein. और प्रोटीन बनाने के लिए बच्चा डीएनए चाहिए होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में. सो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. सो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बच्चा, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ. बट बिफोर दैट लेट अस हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड. हु इज लीडिंग द लीडर बोर्ड? हु इज द टॉपर ऑफ द डे? Okay, so if you like the very first question, just hit the like button. ठीक है, चलिए. So Madhusudan is leading the leaderboard with 983 points. All of you are doing very great. Good. So yes guys, how you can join? जिसने अभी तक पहली बार ज्वाइन करे बच्चा, what you need to do, you need to just enter www.menti.com and you need to enter this code. The code is 7271389. ठीक है, जो बच्चे लेट हो गए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, बच्चे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए. दिस इज द मेंटी कोड. इट इज 7271389. राइट, चलिए. Are you guys ready for the question number 2? How many of you are ready for the question number 2? Just give a thumbs up in the chat box. फटाफट से chat box में thumbs up दे दीजिए जिससे ये समझ में आ जाए कि आप लोग question number 2 के लिए ready हैं. Okay, fine, great. Launching the question number 2, and the question number 2 is on the screen. Let us see the question number 2. Plant cells are connected by channels through their walls called, and the options are plasmodesmata, desmosomes, tight junctions, gap junctions. The question is in front of you, so all of you mark your question. The time is running up. Plant cells are connected by channels through their walls called. किससे connected रहते हैं? With the help of plasmodesmata, with the help of desmosomes, tight junctions or gap junctions. I hope that many of you will mark it correctly. Yes. We have few seconds left now. The time is up. So great. So 38 kids have marked it correctly. बहुत सही बच्चे. Competition tough हो रहा है इसका मतलब. तो बच्चा, plasmodesmata are the minute openings. They are the minute channels through which two plant cells are connected. As you all know, the plant cells have cell wall. ठीक है बच्चा, तो cell wall, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होते हैं. उस सेल वॉल में माइन्यूट चैनल्स होते हैं जो कि दो प्लांट सेल्स को कनेक्ट करते हैं, एंड द माइन्यूट चैनल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा. ओके, सो यस, क्लास 9th NCERT. Iram, what you need to do? Okay, dear, you need to just enter this code, dear, 7271389. आपको menti.com पे आना है बच्चे और आपको ये एंटर करना है. ठीक है, चलिए. Question 3. Are you guys ready for the question number 3? But before that, let us have a look over the leaderboard. Who is on the top now? Yes. So we have Milishri. Okay, fine. So we have Milishri who is leading the leaderboard. Great, dear, with 1906 points. She is leading the leaderboard. Wow, great. चलिए, question number 3 देखते हैं.
Good evening, Shamima. 1389, dear, 1389. Iram, it's not 88, it's 89. Okay, okay. Chaliye. No, Tanu, I think it's everything is fine. Chaliye, let us see the question number 3, guys. So the question number 3 is in front of you. Cell drinking is. Which of the following is also known as cell drinking? And the options are exocytosis, osmosis, pinocytosis and phagocytosis. Which among the following is known as cell drinking? इसमें से कौन सा प्रोसेस है बच्चे जिसको cell drinking कहा जाता है? It's a very easy one. I hope that many of you can mark it very easily. बहुत सही. Okay, okay, great, great. Hi Nidhi. Okay, few seconds left. Fine. Time is up now. So guys, we have around 26 of kids, those who have marked it correctly. Chaliye, let us move to the YouTube again so that I can tell you the correct answer. So dear, basically, if I talk about, okay, basically, if I talk about phagocytosis, ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करिए. एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच थिंग्स एंटर इनसाइड द सेल, जिससे चीजें सेल के अंदर आती हैं. इट कैन बी ऑफ टू टाइप. वन इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. सेल क्या करेगा, खा रहा है, कोई सॉलिड पार्टिकल ले रहा है. एंड द अदर वन इज pinocytosis. Pinocytosis is known as cell drinking, while osmosis is just a transport of material from its higher concentration to lower concentration. Yes dear, from its higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. While the word exocytosis means चीजों का बाहर निकलना. बहुत सही. So answer is pinocytosis. आज से ये सबको याद रहना चाहिए. What do you mean by pinocytosis? ठीक है. Anushka, we are like doing questions from cell, tissues and why do we fall ill. Okay, moving to the next question. Just refresh it once, Suman, if you are like, who is on the top of the leaderboard? Okay, fine. Who is leading the leaderboard? Thank you, Nayasa. Thanks a ton, dear. Okay, so Pragya is on the top of the leaderboard. So आप देख सकते हो बच्चा लीडर बोर्ड में चेंजेस आ रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन, अनदर लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में someone else on the top of the leaderboard, सेकंड में कोई और, थर्ड में कोई और. So we are finding a change in the leaderboard. So yes, which means the competition is tough, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं. Who is leading the question? What is the question number 4? And the question is in front of you. Okay. Okay. Do you want me to launch it, guys? Yes. Let us see the question. So question is saying, okay, centrioles take part in the formation of. It's a very easy question. अगर आपने self revise किया होगा, then you can very easily mark this question. Centriole take part in the formation of. You need to read the question very carefully. You need to be vigilant. थोड़ा सा आपको vigilant होना पड़ेगा और question को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. Centrioles take part in the formation of cell plate, spindle, nucleus or to start cell division. चलिए. So we have around 17 of you. आप में से 17 बच्चे हैं जिन्होंने ये चीज इस क्वेश्चन को सही मार्क किया है. So you all know basically if we talk about centriole plays a very important role in the formation of spindle. वो जो thread like structure होता है dear, okay, जो thread like structure होता है dear उसको centriole कहा जाता है and the स्पिंडल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, when you have studied the cell division, you came to when you have studied the cell division, you came to know about, suppose ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है बच्चे, ये क्रोमोसोम होता है,
ये सेंट्रियोल होता है, यहाँ से ये थ्रेड्स निकल रहे होते हैं. These threads are known as spindle, and the centriole, they play very important role in the formation of spindle. I hope that everyone is doing great. Some of you were asking about the mast cell. बच्चा, mast cell basically mastocyte को कहा जाता है. They play a very important role in your immune system. हमको immune system provide करने के लिए बहुत important role play करते हैं. ये histamine release करने का भी काम करते हैं. चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एवरीबॉडी कम टू द मेंटी. लीडर बोर्ड देख लिया जाए. चलिए, सो इफ यू आर enjoying the session and if you are enjoying the questions, please do not forget to hit the like button and to share it with your friends as well. So okay, wow, fourth question, another person is on the top of the leaderboard, dear, and the person name is MS Dhoni. I think it should be Abhinav. Okay, it should be Abhinav, and the points are 3827 point. You are doing great. All of you are doing great. Okay, so जिसने अभी ज्वाइन किया है बच्चा, what you need to do, you need to go to www.menti.com and you need to enter 7271389 as your code. ठीक है, चलिए. Okay, fine. So let us see the question number 5. So I think everybody is ready for the question number 5. Chaliye. Guys, see the question number 5. And the question is in front of you. The two subunits of ribosomes remain united at a critical level of. इसमें से किसका लेवल ये डिसाइड करता है कि जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट हैं वो एक दूसरे से यूनाइटेड रहेंगी या नहीं रहेंगी. एंड द ऑप्शंस आर कैल्शियम, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम. ओके, the question is saying the two subunits of ribosomes remain united at a critical level of calcium, copper, manganese, magnesium. Fine, let us see. This question can bring some twist. Great. So we have 16 of you, those who have marked it correctly. Yes, dear. The magnesium का concentration decide करता है. It plays a very important role. The concentration of magnesium plays a very important role कि जो दोनों सब यूनिट हैं राइबोसोम की, the large subunit and the small subunit, they will remain united or not. So किस किस को ये आंसर पता था? Just tell me. ये जो 16 लोग हैं इन्होंने तुक्का लगाया या पता था? Okay, just tell me. Yes, yes. So I hope that everybody is enjoying it. Fine, dear. So let us see the next question. Okay, fine. Okay, okay, okay. Chaliye, let us have a look over the leaderboard. Okay, fine. Chaliye. Let us have a look over the leaderboard. Who is leading the leaderboard? So we have, okay, we have Muhammad Zunad Safi on the top of the leaderboard, followed by Nayasa, the biggest fan of Abha Ma'am. Thanks a lot, dear, with 4416 points. So are you guys ready for the next question? Great, Khushi. Everyone is doing great, is giving their great. Chaliye. Pranav, you are in class 10th. We have mentioned the same. Okay, okay. I think we are doing questions today. Okay, chaliye. Next question dekhte hain. Those who have just joined, you need to go to this code. You need to use this code 7271389, and guys, do call your friends too, so that they do not miss such important session and you can, okay, and there must be a tough competition between you guys. Yes, chaliye. See, let us see the question number 6. Okay, what is common between amyloplast, elioplast and aleuroplast? चलिए बच्चा आप ये बता दीजिए कि amyloplast, elioplast and aleuroplast में common क्या है? The presence of pigments,
possession of thylakoids and grana, storage as function, and all of the above is the common between these three. Okay. Okay, yes, Amara. Yes, please do the question. Please focus on the question, dear. Time is up. Okay. What happened, guys? Okay. So, bacha, amyloplast, elaioplast, and aleuroplast. Let us come to the YouTube and let me explain you this. So, बच्चा अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो डियर ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट इज अ स्टोरेज प्लास्टिड. इट इज ऑफ 3 टाइप. ओके, इसके 3 टाइप्स होते हैं. अमाइलोप्लास्ट, ओके, अमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट and aleuroplast. Amyloplast is a leucoplast which is important for the storage of starch. Elaioplast is important for the storage of oil, basically lipids and fats. And aleuroplast is important for the storage of protein. So they all, okay, what is the common between they all? That they all perform the function of storage. I hope that this is clear to all of you, that why they are that much important and what is the common between all of them. चलिए आ जाते हैं दोबारा से मेंटी की तरफ. और मेंटी क्या कहता है कि लीडर बोर्ड कौन लीड कर रहा है. लेट अस सी, लेट अस हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड. ठीक है बच्चा, सिलेबस के ही क्वेश्चंस रहेंगे तो मजा कैसे आएगा. ठीक है, सो वी हैव सेम क्वेश्चंस रहेंगे तो मजा कैसे. वी हैव मोहम्मद जुनैद सैफी लीडिंग द लीडर बोर्ड, बट ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट. ओके, चलिए. या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, यस अथर्व, दे आर वन एंड सेम थिंग डियर. Okay, so are you guys ready for the question number 7th? Do you want me to launch question number 7th? Yes. What you need to do, those who have just joined, all of you come to the MENTI. You need to use this code 72711389. Dear, 72711389. आ जाइए फटाफट से. देखते हैं इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है. Question number 7 is saying main function of dictyosome. Yep. So let us see how many of you are aware about the dictyosome. It's very simple. I hope that many of you have idea about this same, what actually the dictyosome is. So what its role? The question is saying main function of dictyosome is, and the options are respiration, formation of carbohydrates, secretion, or breakdown of fats. Which among the following is the main function of dictyosome? Great. I'm expecting a lot of you can mark it correctly. बहुत सही. It's okay, Suman. You are here to learn something new, and बच्चा आप सीख रहे हैं. So 13 of you have marked it correctly. इस क्वेश्चन को समझते हैं. बच्चा बेसिकली डिक्टियोसोम होता क्या है? प्लांट सेल हैव गोल्जी apparatus, वेरी स्मॉल गोल्जी apparatus, बहुत स्मॉल गोल्जी apparatus रहते हैं जिसको डिक्टियोसोम कहा जाता है. आप सबको पता है डिक्टियोसोम का काम क्या होता है. डिक्टियोसोम का काम होता है डियर, मतलब गोल्जी का काम होता है सिक्रीशन. यस, बहुत सही. पैकेजिंग होता है, सिक्रीशन होता है, स्टोरिंग होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सिक्रीशन. अगेन मोहम्मद जुनैद सैफी इज लीडिंग द लीडर बोर्ड. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट. I can see a tough competition between you guys. So just jot it down this point, that dictyosome. Okay. Yes, Athar, yeah, you were right here. Dictyosome is basically Golgi body को कहा जाता है in plants. In plants, Golgi bodies are known as dictyosome. Just jot it down this point कि आपको ये हमेशा याद रहे. चलिए. Question number 8 की तरफ बढ़ते हैं and let us see the question number 8. So how many of you are ready for the question number 8? What happened to this? Okay, I think there was some glitch. Okay, fine. Okay, there is, okay, so Zunad and I think it should be Abhinav. ठीक है?
या वंशिका, देयर आर क्वेश्चंस डियर, यू नीड टू वेट फॉर द सेम। चलो बच्चे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग the substance produced by a cell in viral infection that can protect other cells from further infection is, ठीक है? The options are serotonin, heparin, interferon and histamine. We have solved a lot of questions based on the same question. So I'm expecting that many of you can mark it correctly. The question is saying the substance produced by a cell in viral infection that can protect, ठीक है, other cell from further infection. We'll look over it, dear Shabima. देखते हैं अभी। चलिए, yes, this was an easy. We have talked about interferon a lot of time. Interferon is basically a low molecular weight protein which fights against the viral infection. ठीक है, एक सेल जिसको वायरल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होता है वो सिक्रीट करता है जिससे कि बाकी के सेल्स वो प्रोटेक्टेड रहे। ओके अथर, बेसिकली इफ अ सेल ओके, लेट अस मूव टू द यूट्यूब सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली डियर क्या होता है, सपोज लेट अस कंसीडर दैट दिस सेल गेट इन्फेक्टेड बाय वायरल, ठीक है, इसको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है। So this particular cell will secrete interferon. It will produce interferon so that all other cells remain protected. बाकी के सारे cells को protect किया जा सके वायरस के इन्फेक्शन से। ओके बच्चा, माइक्रोफाज सेल plays a very important role in phagocytosis. वो phagocytosis, I hope that you're talking about microphage. Macrophage, they play a very important role in phagocytosis. Moving to the next, let us have a look over the leaderboard. Who is on the top of the leaderboard? Okay. Fine. Okay, so yes, Zunad is again on the top of the leaderboard. Great, you all are doing great. So yes guys, if you are enjoying the question, do not forget to hit the like button, ठीक है? And those who have just joined the session, you need to go to menti.com so that you can do the question, and you need to use this code. The code is in front of you, that is 727138. It's okay Shamima, you are all of you are doing great. You are learning something new and you are here to learn. Okay, बच्चे, the code is 727138. Those who have just joined, you need to go to menti.com. You need to go to menti.com and you need to enter this code. The code is 727138. चलिए, now let us see the question number 9. What actually the question is trying to say. बढ़िया, Select the correct statement regarding the swan cell. आप सबने नर्वस टिश्यू पढ़ा है, नर्वस टिश्यू में नर्व पढ़ा है और न्यूरोग्लियल सेल पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा श्वान सेल। ये जो श्वान सेल है उसका काम क्या होता है? इट सराउंड एक्सॉन ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इट सपोर्ट मसल सेल्स, इट इज फाउंड इन द हावेशियन सिस्टम ऑफ द बोन, इट फॉर्म्स बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम। Let us see how many of you can mark it correctly. I have given a lot of hint for this particular question. I expect that many of you can mark it correctly. So 24 of you. बच्चा, मैंने starting में ही nerve बता दिया था, nerve fiber. So I was expecting that many of you can mark it correctly. Let us understand this question, but before that, let us have a look over the leaderboard. Who is leading the leaderboard? So बहुत सही. Okay. So who is on the top of the leaderboard? I think the brain, the nerves which originate from brain is known as cranial nerves. So again we have Mohammad Zunaid Saifi leading the leaderboard. इस question को समझते हैं जो अभी हमने किया है. So बच्चा, अभी जो हमने question किया है ना उसको समझ लीजिए, ठीक है? तो बच्चे ये हमारा नर्व है, ठीक है? ये हमारे नर्व का एक्सॉन है, ये उसका सेल बॉडी होगा। तो बच्चा, इस नर्व के ऊपर, डियर, इस नर्व के ऊपर
एक माइलिन की कवरिंग रहती है इस नर्व के ऊपर डियर, ये माइलिन की कवरिंग रहती है। और ये कवरिंग कौन बनाता है? एक टाइप का सेल, उस सेल को न्यूरोग्लियल कहते हैं। दिस सेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द नर्व्स एंड दिस न्यूरोग्लियल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन। ओके, सो न्यूरोग्लियल सेल का एक टाइप है श्वान सेल जो कि माइलिन बनाता है। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, okay, let us see, let us move to the next question. I hope that everybody is ready. तैयार है सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? Are you guys enjoying the questions? If you are, just hit the like button so that I get to know that my kids are enjoying. Okay? जिससे मुझे बच्चा ये पता चल पाए कि हाँ भाई बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए। चलो भाई आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ फाइन, क्योंकि बच्चे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे तभी तो मजा आएगा, इजी क्वेश्चंस तो हम कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 and the question is in front of you. I hope that everybody is ready for the question. Nodes of Renware are found in, this is an easy one. जो हमारा एक्सॉन होता है ना उस पे नोड्स ऑफ रेनवेयर रहता है, तो इनमें से किस पे मिलता है हमको नोड्स ऑफ रेनवेयर? वी फाउंड इट ऑन अ कार्डियक मसल फाइबर, वी फाउंड इट ऑन अ स्ट्राइटेड मसल फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जैसे नर्वस टिश्यू को थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर सकता है। दैट नोड्स ऑफ रेनवेयर आर फाउंड इन। बहुत सही, बहुत सही। Yes, the time is up. Great, we have 30. ठीक है, we have 30 kids who have marked it correctly. Wow, it's amazing. Let us have a look over the leaderboard. So who is leading the leaderboard, dear? So yes, fine. So we have Zunaid Sefi who is leading the leaderboard. Let us move to the YouTube so that we can understand this particular question. बच्चा इस question को समझने के लिए बच्चे सारी बुक्स बेस्ट हैं, ठीक है, आप बस जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़िए, सब बुक अपनी जगह बेस्ट है। तो बच्चा अगर मेरा कुछ नर्व्स होती हैं जिनमें एक्सॉन रहता है, इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ रहता है, तो बच्चा आप जब भी एक्सॉन नर्व के डायग्राम को देखेंगे ना, यहाँ पे डियर गैप रहता है, दिस गैप इज नोन एज नोड ऑफ रेनवायर। या डियर यू आर पाखी, एम आई करेक्ट? यस। So yes, let us move to the next question, guys. Now Pakhi, you can do from this particular question, no problem. चलिए आ जाइए फटाफट से, मुझे लगता है सब लोग तैयार हैं क्वेश्चन के लिए और हम मूव कर सकते हैं अपने मेंटी पे। What you need to do? What you need to do? You need to go to menti.com. It's www.menti.com and the code is 7271389. I hope that all of you are enjoying the session and all of you are enjoying the questions too. We all are here to learn. हम यहाँ पे सीखने आए हैं और हम थोड़े टफ क्वेश्चन से ही चीजें सीख पाते हैं। चलिए मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, और 11th क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, लेट अस सी। जूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आपने स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू पढ़ा है, आप ये बताओ कि जूट किसका बना होता है, जूट कौन सा फाइबर है, बास्ट फाइबर है या वुड जाइलम फाइबर है, स्क्लेरीड्स है, ट्रेकीड्स है, व्हाट एक्चुअली द जूट इज? जूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ xylem fiber, phloem fiber, sclerids or tracheads. Let us see how many of you can mark it correctly. Okay, yes, we'll see. बहुत सही, बहुत सही। So 7 of you have marked it correctly. No बच्चे, sclerids stone cells को कहा जाता है, stone cells कभी भी fibers नहीं बनाते हैं डियर। जूट इज बेसिकली बास्ट फाइबर जिसको फ्लोएम फाइबर भी कहा जाता है। जस्ट जॉटेड डाउन दिस पॉइंट एंड गो एंड रीड अबाउट, आज जाके बास्ट फाइबर्स के बारे में पढ़िए तो आपको आइडिया लगेगा व्हाट एक्चुअली दी जूट इज। ओके,
Let us see the leaderboard. Fine. Fine. Who is on the top of the leaderboard? बहुत सही. Again, we have Mohammad Zunaid Sefi who is leading the leaderboard. Wood बच्चा xylem fiber को कहा जाता है अथर. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12. Yeah, Sudarshan, I have just like there are some questions which are difficult. I do agree, but we are here to learn. I just want all of you to learn something new. That's why I bought such type of questions. They are not difficult. You cannot say they are basically twisted one. You can say they are not straightforward. Okay, I hope that everybody is ready for the question number 12 too. And the question is in front of you. What actually the question is trying to say? The question is saying secondary growth is absent in monocot since. अब यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, आपको ये ध्यान देना है कि सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है. सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, विच टिश्यू विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, देन यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन वेरी इजली. सो you need not to bother about monocots. So that's why I told you the questions are not difficult, they are just twisted, they are not just straightforward. Yes, we'll see how many of you. बहुत सही. Okay, great. So 24 of you have marked it correctly. Yes, dear. Secondary meristem. Okay, we all know that secondary meristem is responsible for the secondary growth, and cambium is a type of secondary, or we can say it's a type of lateral meristem. So the correct answer is they do not have cambium. The monocots, they do not have cambiums. That's why they do not show secondary growth. I hope that the question is clear to all of you. That's why I say when you are reading a concept, you should be very much clear with your concept. ठीक है? बहुत सही. Sure. Difference between monocot and dicot. Yes, dear. Monocot is basically plants with one cotyledon with one seed leaves, while dicots are the plant with dicotyledonous. Sure. So Darshan I'll try my best to bring on the same. चलिए लीडर बोर्ड की तरफ देखते हुए, who is leading the leader board? Okay, dear, great. You all are doing great. So we have again Mohammad Zunaid Sefi leading the leaderboard. What happened, Shamima? You are here to learn, बच्चे. No need to send such things. You are great. You are doing great. Fine. चलो आ जाओ. Next question की तरफ देखते हैं. Move to the question number 13, and all of you come to the MENTI. You need to just enter the code 7271389. Hit the like button if you are enjoying the questions and you are here to learn something new. You are not just want to do the simple questions. You are here to learn something new. You are here to deal with the situations. So just hit the like button, subscribe to the channel and press the bell icon so that you remain notified for such amazing questions and sessions. चलिए 13th क्वेश्चन की तरफ देखते हुए क्वेश्चन क्या कहता है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है. बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्यूलर होती है, फाइबर की बनी होती है, एपिथेलियल सेल के नीचे पाई जाती है. BNCR करेक्ट. You need to select the correct option with respect to basement membrane. They are cellular. The fibers are present found under epithelial cells. B and C are present. ठीक है? Okay. Okay. So let us see. So we have 25 of kids, those who have marked it correctly. बहुत सही बच्चे. Basement membrane की अगर हम बात करते हैं, basement membrane is a non-cellular membrane जिसके ऊपर हमारे epithelial cell जिसके ऊपर हमारे एपिथेलियल सेल रखे रहते हैं, पड़े रहते हैं. ठीक है. सो what actually this basement membrane is made up of? This basement membrane is made up of collagen fiber. So बच्चा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ से basement membrane के लिए क्या क्या करेक्ट है. It is made up of fibers होते हैं और ओके एपिथेलियल सेल इनके ऊपर लाई करता है. चलिए let us have a look over the leaderboard. Who is leading the leaderboard? बहुत सही. All of you are doing great. Fantastic.
Thank you, Pakhi. Thanks a ton, sweetheart. So we have Mohammad Zunaid Saifi leading the leaderboard with 10027 points. Great. Madhusudan, Nyasa, Kirti, MSD, Legend, Hanan, Teddy Gupta, Anupriya, Anshuman Mishra, Pranav. You, everybody in the class, all of you are doing great. Good to see you all. Sudarshan, yes, on the app, but on the YouTube we have Sona sir, who is on the Goprep Class 10th. Chaliye. Next question. Are my kids ready for the second last question? क्या मेरे students second last question के लिए ready हैं? So बहुत से student अभी तक fight कर रहे हैं. You all are doing great. Good to see such crowd. Good to see such amazing crowd. मजा आता है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में. चलिए. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं. यही जज्बा होना चाहिए बच्चा. आप सीखने आए हैं और आप यहाँ पे सीख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हुए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चा? द क्वेश्चन इज सेइंग बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम सेल्स दैट आर फॉर्म्ड इन. अब आपको ये बताना है बी और टी सेल्स का, बी और टी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है. ये तो आपको पता ही है. थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट कर दिया. आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम सेल्स दैट आर फॉर्म्ड इन. तो आपको थोड़ा सा just you need to understand that how you can make the questions easy for you according to yourself. बहुत सही. All of you are doing great. Fantastic. बहुत सही. So we have how many kids? Okay, great. So we have 18 of you, those who have marked it correctly. बच्चा जब हमने इम्यूनिटी, जब हमने इम्यून सिस्टम के बारे में बात की थी तो हमने बी और टी सेल्स की बात की थी. अबाउट बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. सो दे बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. इन दोनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है. आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, आई होप दैट द क्लास इज giving you some new information. You are learning something new in this particular class. We are here to learn something new. पुराना तो हम पढ़ते आ रहे हैं, नया भी सीखना है क्वेश्चन के साथ मजे करके. ठीक है, just hit the like button so that I get to know that my kids are enjoying. This is the way by which we are also able to understand, yes, that the kids are enjoying. बहुत सही. Yes. Okay, so Vanshika, there are questions. I think we don't have much from them. We'll try to bring something from them also. बच्चे मैंने last class में भी करवाए थे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं. So Mohammad Zunaid Saifi is leading the leaderboard with 1069 points. 10699 points. Now, so yes, the last question for the day, which will decide our leader of the day. But for me, all of you are leader, all of you are doing great. ये तो हम मजे करने के लिए, ये तो हम enjoy करने के लिए सीखते हैं डियर. ठीक है. प्रतिभा, like बच्चा, you need to subscribe to the channel and you need to follow the Telegram group so that you remain notified 4 PM. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं. The last question of the day and the question is in front of you. What actually the question is trying to say? AIDS is caused by HIV among the following. Which one is not a mode of transmission of human immunodeficiency virus? इसमें से कौन सा? ये तो easy question है. पहला कहता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, दूसरा कहता है शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल, तीसरा कहता है शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, चौथा कहता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. So let us see how many of you can mark it correctly. I hope that many of my kids will mark it correctly. बहुत सही, बहुत मजा आया आज के सेशन में, बहुत मजा आया मुझे भी. Okay, so 26 of you have marked it correctly. Yes dear, AIDS is basically फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होता है और हैंड शेक करने से कोई फ्लूइड का ट्रांसमिशन नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. So let us have a look over the leaderboard. Who is the leader of the day? Okay, so we have Mohammad Zunaid Saifi. Okay, yes. So Mohammad Zunaid Saifi, 11603 points. Congratulations to you. Congratulations to all my dear kids जिन्होंने अभी तक फाइट किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें सीखी. God bless you all. चलिए बच्चा, अब हम कुछ और भी इंफॉर्मेटिव चीजें समझ लेते हैं. As I told you all
that revision is very important. That's why we have launched, the GoPrep has launched for a mini course for you in which you can revise your quadrilateral chapter. बच्चे अगर आपको आपके quadrilateral chapter में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं. It's a 5-day course which will make you master in the quadrilateral within 5 days. ठीक है, सिबांदना आज कोई क्वेश्चन नहीं है बट आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, दे आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स. अथर्व, दे आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स. नाउ and yes, again for this course, the course will help you in all the possible way. It will allow you to it will allow you to give exposure of a lot of questions and various type of questions. So yes, I hope that all my kids are doing great. Fine. Okay, now so this is our the GoPrep live learning app. So from where you can get this app, you can get this app from Google Play, where in this particular app you get you get various live classes on this particular app. You get 24/7 doubt clearance. Yes, Abhishek, we are about to end the session here. So what actually the histology is the study of tissue, and at the end I just want to tell you how you can join me on Telegram. You just need to download the Telegram. You need to search about the live floor, which is my official Telegram group. Also, you will get the link of the same in the description box. I hope that all my kids enjoyed the session. Please do not forget to like the session and subscribe to the channel. Also to press the bell icon so that you remain notified for such amazing session. See you all in the next class. Till then, bye bye. Take care. Stay blessed. Good night.